हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है undawn के एक और नए वीडियो में। जब तक भाई गेम स्टार्ट हो रहा ना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक कर दो एक, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जो वीडियो देखते हैं बट उस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे भाई। प्लीज़ भाई कर दो, इससे मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अभी जितना सोचा था उतना तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है। तो देखते हैं भाई कब तक चलता है ये सब, ठीक है। और आप इस मंथ का जो सब्सक्राइबर है ना, वो एम रखते हैं भाई 100 का, ठीक है। अपन 100 करने का ट्राई करेंगे। और चलो देखते हैं आज क्या है, आज कौन सा मिशन है। वैसे मैंने कुछ मिशन रात को कर लिए थे भाई कंप्लीट। तो ना मैं एक चीज़ दिखा था तुम लोगों को, मतलब क्या ही बोले, मज़ा आ गया वो। मैंने एक गन क्राफ्ट की है, देखो भाई, स्नाइपर, वो भी 4x, क्योंकि मैं 6x क्राफ्ट नहीं कर सकता भाई अभी, क्योंकि लेवल उसके लिए 26 चाहिए, जो कि नहीं है अपना 23 है। तो उसके लिए पहले लेवल को बढ़ाना होगा, इसके बाद कर सकते हैं। और ये कुछ नया है, फालतू का है, क्योंकि इसके पीछे पैसे वेस्ट करना पड़ेंगे भाई, ओके। और अभी तो अपन कमाते कुछ नहीं है, तो फिर अपना चुपचाप काम है वो करते हैं। तो चलो देखते हैं आज का क्या मिशन है नया, या हाँ चलो चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ अगर नया हो तो। ओके चलो, लेट्स सी। शेल्टर पे जाना है भाई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जॉन से बात करनी है, तो चलो चल देखते हैं इससे क्या बात करता है ये। But do we have any clues that might help us find her? भाई एक मेडिकल जो स्टाफ है वो गायब हो गया, और पता नहीं कोई क्लू है या नहीं इसके पास, चलो देखते हैं। आर्चर पोर्ची, या जो भी नाम है भाई, मेरा ना प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार है इंग्लिश में, मुझे सीखना पड़ेगा भाई, स्पेशली फॉर गेम्स। कभी पढ़ाई की नहीं है भाई, तो अपन ऐसे ही है, ठीक है। टूटी फूटी Just इंग्लिश let me. आने थे। तो चलो इसको क्या कह रहा है, ड्रॉप यू, ओके। ये अपने को वहाँ छोड़ रहा है, तो फिर चलो भाई। I'm ready. हाँ भाई अपन रेडी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं आइलैंड पे। चलो चलते हैं भाई, कहाँ जाना है, क्या देखना है। पॉकेट वॉच, अब क्या करना है ये तो भाई याद है ना, नहीं पता तो अपन को लास्ट वाला एपिसोड देख लेना भाई, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये कौन है, तो आप लास्ट वाला एपिसोड देख लेना, उसमें आपको एक स्टोरी मिल जाएगी जिसमें उनके बारे में। हाँ भाई चलो ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब भाई, ये इनकी बेटी है वही, नहीं हाँ आई थिंक वही है। ये कौन है भाई? हाँ You don't look like you're from around these parts. हाँ भाई, अपन यहाँ पे तो नहीं है। I'm not. I'm looking for a friend who's gone missing. I think she might be on the island. What'd she हाँ look like? I might have seen her. हाँ That'd be great if you could help. She's in her 20s, with short blonde hair. She's one of our medics. हाँ ओके, अपन ने बता दिया कि वो 20 साल की ईयर की है, और फिर वो एक मेडिकल निंजा। I can't निंजा help, क्यों I'm बोल रहा हूँ भाई, मेरे afraid. को देख देख के I ना haven't seen any निंजा ही young दिखते भाई blonde सब लोग। doctors lately. That's a shame. ओके If I were you, I'd get out of here as soon as possible. There are भाई, ये अपने को zombies on धमकी the दे रहा है। island. There's no point getting killed trying to save someone else. हाँ भाई, ये डर गया है, खुद डरा हुआ इसलिए बोल रहा है भाई, जॉम्बी से। Well, So I'd get going, if you want to stay safe. हाँ Who am I? Why,
I am the one and only poet on this island, Vincent. ये विंसेंट है भाई, ये एक पोइट है, ठीक है, The अच्छी बात है। poet? What is this chaotic zombie-infested world of ours, if not a deconstructed postmodernist poem? And who better to immortalize it in verse than a postmodernist poet such as myself? हाँ भाई, तू जो कुछ भी कर रहा है वो बेकार ही लग रहा Sounds like nonsense to me. है भाई। इस अपने हीरो की और मेरे थिंकिंग सेम है, पता है ना। Each zombie is a line in that poem, a part of a satire on greatness and dignity, and you should leave. Decent people such as you cannot coexist with the deconstructed. Quick, be gone. भाई ये मुझे ज़ॉम्बीज़ की साइड लेता हुआ क्यों दिख रहा है? And why do I stay? Because I cannot coexist with the decent people. भाई ये डिसेंट पीपल। What do you mean, decent people? वंस मोर टाइम देखा भाई, अपने और अपने हीरो के ख्याल मतलब थिंकिंग एक सेम टू सेम है। जो मैं सोचता हूँ वो ये बोलता है, लाइक। Want to know what decent makes? Not too pure, that's what it takes. If you're too pure, decent you ain't, and decent folk ain't got that taint. क्या मतलब हुआ भाई इसका? भाई छोड़ो, मुझे कुछ समझ नहीं What? You're talking complete nonsense. हाँ मुझे भी वही लगा। Clear out. Leave, or I'll tear you limb from limb. ओके Okay. I'm going. Just stay calm. भाई धो देना इसको, एक स्नाइपर मारू क्या भाई इसको? काश मार सकता हूँ मैं इसको। भाई फंस गया मैं, कहाँ फंस रहा हूँ? चलो, ये क्या हुआ भाई? अभी लैग हुआ क्या फिर से? पता नहीं। ओके, क्या है यहाँ पे? थिंक ओवर भाई। What a mess. अच्छा भाई अपने। I can't find any other clues, so I guess I'll follow him. हाँ भाई फॉलो करता, मुझे भी उसमें पे शक हो रहा था। हाँ भाई कहाँ जाना? भाई कुछ आ रहा बट पता नहीं क्या है। Can you really not comprehend the logic of our world? If you show kindness to others, they betray you. Kindness does you no good, nor does it help those you give it to. There is भाई no इसके place for वर्ड से मुझे it. लग रहा ना इसके साथ कुछ बुरा हुआ, इसलिए ये ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है। बाकी है अच्छा बंदा, इसने कुछ अच्छा करने का ट्राई किया बट लोगों ने इसको The धोखा दिया। zombies are dangerous, but they have no malice. They are like a runway truck, careering forward, but people scheme to hurt each other, and all we can do is to hurt them back if we are to survive. भाई इसके साथ कुछ जरूर बुरा हुआ मुझे लग रहा Thanks for your advice. I'll consider it well. The zombies are dangerous, I can tell, but the world of people, that noisy nation, I've left it behind for this isleization. So you took us here to avoid those who would do you wrong? If people hurt you, you should hurt them back. Running and hiding like this will never make you strong. भाई ये कह रहा भागना रहने दो, जो आपको कुछ मतलब लड़ाई वगैरह करता है उसको वापिस ईंट का जवाब पत्थर से, तो पत्थर का जवाब ईंट से दो। भाई क्या The बोल रहा हूँ world मैं? may मेरा burn, दिमाग the काम ही नहीं sun कर may रहा। fall, my moral fiber will still stand tall. But don't you think we should reunite and walk as one from dark to light? ओके भाई। Melodramatic delivery, incoherent themes, a rhyming scheme more criminal than I am. Don't you remember all those people you were kind to, who repaid you with violence? Without me, you and this body of ours could never have survived. भाई ये कह रहा है कि तुम्हें वो लोग याद है क्या जो जिनके साथ तुमने अच्छा किया और उन्होंने बदले में तुम्हें बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ? तो मुझे लग रहा है इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ भाई, क्योंकि इसकी बातों I'll से तो लग bet. रहा I'll bet. है। ओके It's true, though. This is a hard world for kindness to survive in.
but that doesn't mean we have no choice but to abandon it. हाँ भाई, वो तो चॉइस अपने पास हमेशा होती है, कुछ एक सही और एक गलत रास्ते में, दोनों के बीच में बहुत कम फर्क होता है। चलो चलते हैं आगे, अपने को वहाँ चलना है तो चलते हैं भाई। अपन असॉल्ट राइफल हाथ में पकड़ते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे कोई बॉक्स है क्या? Bad news, Trey. So, I met this character on the island and decided to follow him. We got to this villa, and I realized that he's been talking to himself the whole time. It's like he has two people inside his head. हाँ हाँ भाई, वो क्या बोलते हैं, दो लोग होते हैं ना, वो मल्टीपल पर्सनैलिटी। His expression keeps changing. One minute he looks friendly, the next he's vicious. The weird thing is, the friendly version talks in rhyme. हाँ, एक राइम में बात करता है। One of the guys has pretty darned brutal way of dealing with others. हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लग रहा है किसी ने उसके साथ बुरा किया। जब वो अच्छा था तो उसकी एक पर्सनैलिटी वो बाहर आ गई, तो फिर हो सकता है उसमें। Got हाँ it. ठीक। I'll take a picture of the villa and then send it to you. हाँ, चलो चलते हैं अपन यहाँ पर। भाई ये स्टोरीज ना आजकल कुछ ज़्यादा ही अलग रियलिटी से थोड़ी बहुत टच करती। मुझे लगा था ज़ॉम्बी गेम में तो ज़ॉम्बीज को मारने के वगैरह का काम चलता होगा, बट यहाँ पे उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ है। कहाँ जाना भाई? जाना तो अंदर ही आई थिंक, या कहाँ जाना पता ही नहीं पड़ रहा। भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? होली स्मिथ, एल्डर डॉटर और जेनी स्मिथ। तो भाई स्मिथ फैमिली क्या कर रही है? ओके, चलो वेला में चलते हैं। यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ नहीं है। कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ मिला। इसमें क्या है? भाई यहाँ पे ना ये विंसेंट पे कुछ स्टोरीज है, लाइक पॉइंट्स की, तो आई थिंक ये कुछ रिलेटेड है इन लोगों से। भाई एक और पिक्चर फ्रेम है, तो उसको देखते हैं। हाँ हाँ भाई, ये पता है ना लास्ट एपिसोड में वो लोग थे कपल्स। इस्थर या जो भी नाम है इस लड़की का वो है भाई। बट इनकी दो बेटियां थे ना, तो इसमें एक ही के। हाँ, Holy, ओल्ड विले। whatever you do, don't. हाँ भाई, अंदर चलते हैं। ये कौन है? Who are you? And who is that other guy? The one without the ski mask. Seems to me you're in a bind with a missing pal you've got to find. ये भाई कोई और है। Is that a rhyme? And who is that other guy? भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वो विंसेंट ही है, उसका एक और अलग पर्सनालिटी है। I am Vincent. That was my bro. I hope that's all you need to know. हाँ विंसेंट, मेरे को लग ही रहा था। Look, all the rhyming is very amusing, but please, can you take me to see Esther? Why do you speak like my bro? I'm not mute, so you should know all of my words will flow and flow. If it's him you'd like to meet, follow me on your 2 feet. भाई ये राइम कर रहा है और इसकी राइमिंग लेवल। Since you should ask, I shouldn't lie. I am he and he is I. भाई मुझे लग ही रहा है ये As डबल a kid, पर्सनालिटी। I was driven away. I roamed the streets just like a stray, and thankfully,
I found my bro who cared for me and helped me grow. My life was good and now I'm strong. It's a shame my bro has gone so wrong. Okay. Esther came to the island in search of kin but suffered for my brother's sin. Perhaps he envied what she once had, but that's no cause to be so bad. Okay. Want me to give the rhymes the boot? Sorry, pal. I'm not on mute. Had I known they didn't care, I'd just have given them the stare. Anyway, my bro's been mad a while, so we're hiding out on this here isle. I can no longer deal with this ridiculous jester. Please, I beg you, come help me save Esther. भाई ये अपने से हेल्प मांग रहा है एस्टर को बचाने के लिए। किसके इसके पीछे जाना है ना? ओके। अब भाई मार क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं इसको? तो बाहर ज़ॉम्बी दिख रहे हैं ना, तो मार सकता हूँ। पहले इससे बात करनी है। It's crawling with zombies outside. Okay, I'm scared. Just stay away. My right to live can't end today. भाई इसको इस सिचुएशन में भी टाइम करनी है। What's wrong with you? चलो इनको मारते हैं। I have such a headache. Don't come hurt me. So, you've had your look-see. ओके भाई मेरे को लगा ही था ये विंसेंट ही है। मेरे को I've had enough of your verse, weakling. Time for you to sleep and me to take control. देख भाई मेरे को पता A ही था। coward I could live with, but the constant doggerel verse. If it had been even slightly postmodern, I could have tolerated it, but no. ओके चलो चलो। Oh, I didn't mean you. Although you do seem a bit reckless. The world's more dangerous than you realize, and you really shouldn't follow strangers into enclosed spaces. मैं अब समझ गया भाई, ये जब विंसेंट छोटा था ना तब इसके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत डरा हुआ था। ये बहुत अच्छा बंदा था, बट इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसको लगा कि इसका एक भाई है, तो उसको इसने हेल्प की। उसको लग रहा था कि उसका एक भाई है जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये ऐसे You दोनों take care of those zombies. करते बड़े I'm हो गए। going to see where that ungrateful doctor has run off to. हाँ भाई, हाँ अपने को ज़ॉम्बीज़ से पंगा लेना है। चलो भाई चलो मरो 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 चलो। हाँ अपने को वहाँ जाना है ना। इधर कोई ज़ॉम्बी बचा तो नहीं है, इसलिए मैंने शॉटगन रखी थी भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती से हाथ में वो स्नाइपर होती ना तो मैं गया था। शॉटगन सॉरी Vincent? What's the matter? भाई स्किल डबल प्रश्न की। My head is spinning. Don't you screw this up for me, asshole. How can a man become such a beast? By what right should I become deceased? भाई इसकी थर्ड पर्सनालिटी भी है क्या? मुझे लग रहा है। No. How is it even possible that someone still has their whole family? Does such a luxury even exist in this world? This isn't fair at all. Your overwhelming sadness ain't got to catch another man hapless. ओके मुझे लग रहा है इसके सर में ना थर्ड पर्सनालिटी भी है, तो अपने को वहाँ चलना। ये विंसेंट पीछे आ रहा है ना भाई? आ गया? हाँ आ तो रहा है। ये विंसेंट है और इसके साथ स्टेट भी यहाँ पे कुछ है भाई, इसको पहले वो करो। I found Esther. She's alive, and it looks like the good Vincent is in control again. But how can we keep it that way? So, all we can do is get Esther out safely? हाँ भाई I'll see what I can come up with. ओके मैं समझ गया। This guy talks in rhyme. उससे But the bad one. ट्राई he कर can't दिया stand भाई it. अपने को। Vincent had two personalities, one good and one evil. हाँ भाई वो तो भाई। I knew it! We're lucky the good one was there. Otherwise, But all is well, so please don't worry. He won't be back in a hurry. हाँ भाई वो बोल रहा है उसका खुद पे कंट्रोल नहीं, और वो दूसरा उसकी जो बैड पर्सनालिटी है वो बाहर आ सकती है कभी whatever. भी। You need to defeat him, no matter how hard it is. Remember, you're the real Vincent.
ओ भाई ये रियल है और वो उसकी Sounds like you don't डर की blame वजह him से for पैदा what हुआ है। happened. I've been watching them for 3 days, and that's what I've been needing to tell him. He has to win. The kind Vincent is the real one. काइंड वाला विंसन रियल है और वो दूसरा उसके डर की वजह से पैदा हुआ है। हाँ अब क्या बात करूँ पहले वाले Then, पर। how did these multiple personalities come about? All I can say for now is that he must have suffered some kind of mental trauma. हाँ मेरे को लगा ही था जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया There's है। tragedy at the heart of every comedy. And the two of them are so different. The brighter the light, the darker the shadows, I guess. Each one reacted against the other and became more extreme. भाई जहाँ पे जो जितना अच्छा होता है वहाँ पे उतनी बुराई भी होती है, तो ये वैसा That's ही as है much as I can tell you for now. The details will have to wait for when we get back and a proper diagnosis is made. Until then, we'll just have to do as much as we can to help the poor guy. ओके Uh-oh. हेल्प करनी है। Looks like he's getting out of control again. हाँ Oh, damn you! All that rapid fire rhyming is ईविल making वाला my head वापिस आ hurt. गया। Don't try and fight me, weakling. The doctor knows our secret, and if you let her go, I'll find the deepest hole on this island and bury you in it. भाई ये इसके खुद की पर्सनालिटी को धमकी दे रहा है। All that chaos? That's your fault. Be strong and kind, and the chaos may halt. भाई ये अच्छा है कि विंसेंट पता है। Shut up, shut up! Oh, this body isn't big enough for the both of us, and a weakling like you could never survive alone in the chaos of this world. भाई इसको डर है, इसी की वजह से ना इसके सारे डबल पर्सनालिटी How का did वो you हुआ है। become so naive? I'll tell you how. Because I was fierce and vicious enough to protect you. How long would you have lasted without me? I kept this body alive. Without it, neither of us would be here. हाँ भाई हो सकता है इसमें बच्चा है। And who do you think can keep doing that in this nightmare world? You or me? Uh-oh. Looks like Vincent is losing. हाँ भाई हाँ क्या बोलूँ मैं। Be brave and be true. Do the best you can do. भाई अपना हीरो राइम कर रहा, मुझे लगा ही था राइम करने। No! It's awful! It scans wrong. The vocabulary is impoverished. An offense to my ears it is. You've learned from all my rhymes. Oh, happiest of times. हाँ भाई वो दोनों एक ही पर्सनालिटी के तो एक दूसरे तो सीखेंगे बट Back! Get back! A man so foolish with such little knowledge of poetics has no right to live. भाई उसके पास जितनी भी नॉलेज है वो उसने खुद रियल है, बट जो इविल वाला विंसेंट है ना उसके पास जो भी है वो उसने उसी से सीखी है, तो It's your time, bro. Do you agree? Vincent, listen to me. I know you're jealous of Esther's domestic joy, but that doesn't excuse your evils, boy. हाँ भाई ईस्टर की No! भाई अब समझ में आ गया ईस्टर की जो I'd better find a place to wash up soon. वो इसी के लिए उसके जो अल्टरनेट था उसकी पर्सनालिटी वो बाहर आ गई उसकी जेलसी की वजह से। Don't give up the fight. It's your body, yours by right. Those rhymes, so coarse, so... You know I'm in. It's time to win. ओ भाई ये अब इसको हौसला आ गया। The love of my parents and brother is my deepest source of shame. I dragged him into my mess, and I have only myself to blame. हाँ भाई चलो I can't believe it. It's getting even worse. My ears. I can't take it. चलो Avoid any more drama. Let go of the trauma. No! भाई राइम में क्यों बात What कर रहा है? hellish verse is this? Even the lowest of reality TV show contestants would be ashamed to sing such a line. You're trying to change the point, and I confess, I didn't know your head was such a mess. Our father is the cause of our hearts so torn, and Esther happened upon this painful thorn. हाँ भाई ये ना What रियल is this पर्सनालिटी अब हावी हो torture? रही है।
उस पे। भाई क्या है ड्रामेटिक है। फाइनल बैटल। You cowardly fools! I spit in your faces. I'll dispatch your souls to hellish places. Accept the truth that I am master. And if you give up now, I'll kill you faster. ये उल्टा उसी को धमकी दे रहा, बट अगर ये मर गया तो वो मर गया तो ये भी तो मर जाएगा भाई, तो ये हो ही नहीं सकता। सब साइलेंट क्यों है? Something's wrong. Dearest brother, though you don't know it, you've just become another poet. भाई ये उल्टा अपने को बोल रहा है। हील वाला को गुस्सा आ रहा है भाई। The love of my family I did not get, so everyone shall have to rue my needs unmet. No, no, that's wrong. That's just wrong. You depraved animals! Send your soul to the extreme depths I must! I'll show the world who owns this body! You're rhyming, my dear brother. फाइनली भाई जो रियल विंसेंट था ना उसको उसने फाइट जीत ली, पता नहीं कैसे, कैसे जीती, जीत तो ली भाई। क्या ये स्टोरीज और ये इसमें रेगुलरली भाई कुछ ना कुछ अलग फिल्मी स्टोरीज है। तो भाई फाइनली वो स्टोरी कंप्लीट हुई और हम लोग आ चुके हैं रेवन शेल्टर पे। अब क्या करना है भाई? किससे बात करनी है क्या? आई थिंक उसी से बात करनी है। हाँ भाई उसका कुछ नहीं हुआ। That's true. But I'd still like to know how Vincent is. विंसेंट के बारे में I don't know what Esther thinks or what's going to happen to Vincent in the future. भाई विंसेंट के साथ क्या होगा? भाई बट मुझे अभी भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इस गेम में ना जो पहले हुआ था तो ये सामने वाले भी वो ही जाती थी, बट अब नहीं आ रही, बस मेरे हीरो की आ रही है, सामने वाले कुछ नहीं आ रही, पता नहीं क्या। मैंने सेटिंग में कुछ नहीं किया भाई। I'm not sure how he will take to remembering the past right now. ओके जो भी आगे बोलो। ठीक है इनसे बात करनी है। Honestly, Dr. Smith, it was hilarious. You won't believe what happened. Oh, you think what happened to Vincent is amusing? Yes. Thank goodness you're all right. That Vincent really is quite a piece of work. हाँ भाई उसको बहुत You know, it used to be very rare to see someone like that. And neither of them, the good or the bad, sounds exactly normal. And that's true. But the good Vincent seems harmless. And he is funny. हाँ भाई रियल वाला बहुत फनी है, वो हर चीज़ को राइम में बोलता है, मतलब बोलता तो क्या राइम करता है। I've never हर heard चीज़। of that kind of compulsive rhyming before. He must have experienced some huge trauma, which caused his personality to split into two completely different people as a coping mechanism. हाँ हो सकता है। His evil alter ego developed as a vengeful response to the sort of trauma he suffered. After all, there's that saying, an eye for an eye, no? It all makes sense, really. हो सकता है भाई उस वो ड्रामा में और उसको Yeah, इतनी ज़्यादा he was प्रैक्टिस की dangerous. उसी में घुस गया कैरेक्टर But he made a kind of sense. But the good Vincent, the original one, में। ओरिजिनल। I think the rhyming was another coping mechanism. A kind of humor to try and ease a terrifying situation. Maybe in the same way people like to sing when they're doing tough physical jobs. ये बात तो सही है भाई, जब भी हम कोई हार्ड टास्क करते हैं ना तो माइंड में कुछ ना कुछ गाने का मन करता है ऐसा कुछ, तो वो हमें वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो अपने को वो काम हार्ड नहीं लगता।
तो ये है वैसे But it's सुनते also true that the evil Vincent might never have appeared if the original hadn't been such a kind person. Brighter lights cast darker shadows. हैं। हाँ भाई ये भी तो सच्ची है, तो फिर तो ठीक है। And that trauma. What do you think it was? We might never know, but it must have been awful. Probably some long-lasting childhood trauma. Families can be tough. भाई मैंने बोला था ना उसके साथ कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से उसकी टू Wow. पर्सनैलिटी हो गई इधर उधर। Anyway, you saved me, as well as Vincent. He may seem like a bit of a jokester to you, but he's actually a very troubled soul. All that rhyming was coming from a very dark place. Remember, good people hurt themselves, rather than hurt others. He needs to move on from that. भाई क्या ही बात बोली है, बच्चे लोग होते जो खुद को खुद को हार्म करते हैं और जो दूसरों को नहीं कर पाते, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। You're not वो just अच्छे talking about Vincent, are you? Well, if you feel things are getting to you, you're welcome to come and talk. You've got a confidant here when you need one. भाई क्या तो इस स्टोरी में ऐसा हो सकता है आगे जाके कभी अपने हीरो की भी डबल पर्सनैलिटी हो जाए, हो सकता है। डॉक्टर ने तो अभी वही आइडिया तो चलो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगोगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।